Students, I'm Ajay sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next chapter 8 of class 7th, wind storms and cyclones. Okay, तो आज हम इस चैप्टर के अंदर विंड स्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, आपको पता है विंड क्या होती है? जो हवा बहती है. अगर मूविंग एयर होती है उसको विंड बोलते हैं. स्टॉर्म क्या होती है? फास्ट मूविंग एयर. और साइक्लोन क्या होता है? ये भी एक तरह का स्टॉर्म के अंदर ही आता है, बट ये क्या करता है? सर्कुलर रेवोल्यूशन करता है. उड़ीसा वाज हिट बाय साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ द 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, a second cyclone with the wind speed of 260 km hit Odisha again. It accompanied by the water waves about 9 meter high. उसने क्या किया? वाटर वेव्स को 9 मीटर हाई तक उछाल दिया. Thousands of people lost their lives. Property worth crores of rupees were destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply. Image taken by satellite of a cyclone approaching the coast of the Odisha. Coast area समुद्र के पास वाला एरिया. Coast India Meteorological Department, New Delhi. Okay. But what are the cyclones? होते क्या हैं ये cyclones? How are they formed? कैसे बनते हैं they? Why are they so destructive? क्यों ये इतने हानिकारक होते हैं, नुकसानदायक होते हैं? In this chapter we shall seek answer to some of these questions. इस चैप्टर के अंदर हम यही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. We begins with some activity involving air. These activity will clarify some basic features concerning the cyclones. Before we begin, remember that moving air is called the wind. Okay, हवा का मूव करना विंड कहलाता है. Air exert pressure. Whenever an activity involves heating, be very careful. जब भी कोई एक्टिविटी के अंदर हीट की बात आए तो उसको केयरफुली ढंग से करो. इट एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली और कैरीड आउट दीज एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ योर टीचर. यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी. आपने क्या करना है? पानी को उबालना है. टेक ए टिन कैन विद लेड, fill it approximately half with water. Heat the can on a candle flame till the water boils. Let the water boil for a few minutes. Blow out the candle. Immediately put the lid tightly on the can. Be careful in handling the hot can. Put the can carefully in the shallow metallic vessel or wash basin. Pour fresh water over the can. What happened to the shape of the can? मैं बोला आपके पास कोई कैन है, उसको गर्म करो, उसके ऊपर एकदम से ठंडा पानी डाल दो. आप क्या देखोगे? वो कैन एकदम से सिकुड़ जाएगा. बट वो कैन पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो पानी था वो पूरी तरह गर्म से ठंडा डाला तो अंदर जो वेपर्स थे एकदम से सिकुड़ गए. एयर प्रेशर अंदर कम हो गया और वो एकदम से सिकुड़ गए. कैन वी गेस व्हाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड? इट कैन नॉट गेट अ टिन कैन. Take a soft plastic bottle, fill it with hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under running water. Recalls now some of the experience. When you fly a kite, does the wind coming your back help? क्या पीछे से आ रही wind help करती है? If you are in a boat, it is easier to row it with the wind coming from behind you. अगर आप बोट चला रहे हो और पीछे से हवा आ रही है तो वो भी आपको आसानी रहेगी बोट चलाने में. Do you find it difficult to ride a bicycle against the direction of the wind? क्या बाइसाइकिल चलाना मुश्किल होता है जब हवा आगे से आ रही होती है? You know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also, you know that a bicycle tube overfilled with air must burst. What is the air doing inside the tube? आपको पता है जब ज़्यादा हवा भर लेते हैं बाइसाइकिल ट्यूब में तो वो फट जाते हैं टायर. क्या होता है उसकी ट्यूब के साथ? Discuss with your friend how the air in the bicycle tube keep it in shape. Okay, तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करो. All these experience show that the air exert pressure. It is due to the pressure that the leaves of the trees banner flag flutter when wind is blowing. You can list some more experience which show that air has a pressure. Okay, वो और भी कई सारे एक्सपीरियंस हम कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि एयर प्रेशर लगाती है. Let us now try to explain why the can get distorted. As the water is poured over the can, some stream in the can
condense into water, reducing the amount of air inside. The pressure of the air inside the can decrease than the pressure exerted by air from the outside the can. As a result, a can get compressed. This activity again confirms that air exert pressure. Okay, तो आज हम इतना ही करेंगे. I hope you will understand this concept. Take care, stay home, stay safe. Bye.